precise. Of the rest is noise. Today, it's only two of us. Mariam gets to enjoy a vacation at, I assume, somewhat warmer Yeah, location. Good for some are her. warmer, some are greener. Yeah. Um Maybe her timing is off by a couple of weeks, but still, like, better. Right. So today we are discussing a topic that is actually very appropriate given the time, because we have just hit like 2 year mark of the actually 3 year mark of the Russian 2020. invasion of Ukraine. And we all witnessed yesterday what happened at the Oval Office with uh, JD Vance, Trump, and Zelensky, the vice president. They're actually trying to school uh, Zelensky on number number of things, and kind of retaliation from him. It was like trending absolutely on every social media. Right. So before we dive into it, I will like very quickly like detail two kind of perspectives that are out there in the market, and like it's highly polarized. A lot of the people subscribe to one explanation of it and totally negates the other one. So it's important that both of those positions are put out there. So, with regards to Ukraine, like Russian invasion of Ukraine, there are two perspectives. One is what Russia claims, and we hear that from the likes of John Mearsheimer and Jeffrey Sachs. They are of the opinion that the Russian invasion of Ukraine, or the Ukraine disaster, as they call it, is a making of West's um, stupid policies. They agree that the intent from the Ukraine and the rest of the Europe plus US to expand all the way to the borders of Russia in the shape of NATO is a clear red line from Russia that we should never have crossed, and we should have actually stopped years before. um, and that, in their opinion, is what led to the invasion of Ukraine. And Russia was always in a great position militarily to overwhelm Ukraine, which they kind of have. And Ukraine, not being part of the NATO, would have little choices as the war progressed. So that was kind of like the gist of that side of the view. And then the other side of the view is that Ukraine is an independent country that got independent in 1991, got independence from Russia. Uh, an independent country, by all international laws, is allowed to make choices that they feel are in their benefit, whether they are economic choices or choices to join certain alliances. So that side of the view thinks that like it was always Ukraine's choice to decide whether they want to be part of NATO slash EU, and not the Russia, and no other country should have the right to invade you just because you made your own independent choices. Um, so those are the two different opinions out there. I myself subscribe to the second opinion, and we will get into the details of why. And you, I believe, is like agree to the Jeffrey Sachs school of thought that it was like US and West mostly doing it. I think
I think it's complicated for me in a way. I of course I kind of see the point where Russia says we are pushed, but I also see the point where Ukraine has been on the target line for a few times. So like that's why I'm saying it's complicated. Yeah, so let's dive right into it. So, if you want to detail like how it all progressed, you're welcome to do that. And also along the way, if you could basically steel man your position or Yeah, 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 the sure. opinion that you agree with. Okay, yeah, perfect. Good, great start. So I think maybe ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय like I will just outline because this has been like quite a hot topic for last 10 years I would say. Yeah. दो 2014 से ये स्टार्ट होती है. Obviously उस रीजन की जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट जो पोलिटिकल क्लाइमेट है वो इससे भी पीछे जाती है. बट अगर 2013 में भी देखें हम, 2013 में जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट था विक्टोर यानुकोविच, उसने सस्पेंड कर दी नेगोशिएशन ईयू के साथ. उसको वो देखा जाता था काफ़ी प्रो रशियन. और फिर उसके बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं. उन प्रोटेस्ट के बाद वो फ्री करता है, रशिया जाता है. फिर रशिया उस मौके की मुनासबत से वहाँ पे अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करता है. और फिर वहाँ से एक स्टार्ट होता है एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया और डॉनबस वार का. दिस इज back into this goes back to 2014. 2014, So yeah. yeah, so वहाँ पे जी लिटिल ग्रीन मैन डिप्लॉय किए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशंस ली जाती हैं और नेक्सेशन स्टार्ट होती है. सो और उस रीजन को डी डीपीआर और एलपीआर लाइक आई थिंक डोंट स्ट्राइक एंड रशियन पीपल रिपब्लिक. और फिर अप्रैल 2014 में ओपन वारफेयर स्टार्ट होती है डॉनबस में. ऑब्वियसली जो लोकल ग्रुप्स हैं उनकी साइड से और रशियन की साइड से फिर वो एक्टिव फाइट्स चलती हैं. ये वॉर इवॉल्व होती है प्रॉपर एक स्टेलमेट में, जो कि एक मीन्स एग्रीमेंट के थ्रू जाके चीज़ें कुछ सेटल होती हैं. बट वो भी इसमें फ्रांस और जर्मनी इन्वॉल्व थे. Yeah. बाय 2021 वो कॉन्फ्लिक्ट आई थिंक कोई 14-15 हज़ार लोग उसमें, 14-15 हज़ार डेथ्स होती हैं Yeah. और कोई 1.5 मिलियन पीपल डिस्प्लेस होते हैं. Hmm. सो लाइक अ ह्यूज डिजास्टर. Hmm. बट अभी तक ये फुल स्केल वॉर फिर भी नहीं बनी है. उस डोनबस रीजन के अराउंड और क्रीमिया के अराउंड की चीज़ चल रही है. बट अब रशिया क्या करता है, रशिया 2021 में एंड अगेन लिंकिंग दिस बैक टू लाइक द स्कूल ऑफ थॉट डिवीजन यू एक्सप्लेन. तो 2021-2022 में आई थिंक प्रिसाइसली फेब 2022 में Yeah. रशिया क्या करता है, वो अपने ट्रूप्स को बॉर्डर्स के ऊपर डिप्लॉय करना शुरू कर देता है. अराउंड लाइक 200 के 190,000 टू बी प्रिस्क्राइब. वो ट्रूप्स को डिप्लॉय करता है, मोबिलाइज करता है. और उसमें वो रीजन यूज करता है कि जी ये नेटो की जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रही है ये थ्रेटन करती है रशियन सिक्योरिटी को. अब यहाँ पे आके अगेन नाउ लिंकिंग माय ओपिनियन टू इट इज, so I think for me there is no zero and one, there is no binary. अब मुझे उसकी एग्जांपल लेनी पड़ेगी बाकी कंट्रीज क्या करते रहे जो बिगर पावर्स हैं, क्या वो लोग ये चीज़ करती हैं. यूएस अलाउ नहीं करता. अभी हम देख रहे हैं यूएस सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर क्या क्या एक्शंस ले रहा है. दे डोंट इवन वांट कनाडा टू हैव कीप हैविंग एक्सेस टू लाइक दैट वार्म वाटर साइड. या जो रशिया का रूट्स ओपन होते जा रहे हैं अलास्का साइड पे, उनके ऊपर उनको इशू लाइक दैट दे हैवंट चेंज द टेरिटरी राइट. सो वो तो वहाँ Hmm. पे शुरू से ही थे. इसके अलावा यूएस जाता है ताइवान तक, वहाँ पे जाके अपनी वारफेयर्स को नेवी वारफेयर्स को डिप्लॉय करता है, एक अपनी प्रेजेंस रखता है. क्यों? क्योंकि चाइना को वहाँ पे चेक में रखना है. उसके अलावा यूएस जाता है ग्रीनलैंड में, वहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखता है अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को करने के लिए. तो आई थिंक जब एक साइड पे हम ये एग्जांपल देखते हैं कि एक सुपर पावर है जो कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाती है, ओमान में, यमन में, हर जगह, सॉरी यमन, इसमें जॉर्डन में वो अपनी एक मेगा प्रेजेंस रखते हैं साइटिंग देयर सिक्योरिटी कंसर्न. और उस रीजन में जो उनके सिक्योरिटी कंसर्न है उनको इंटैक्ट रखना है. तो अब एक कंट्री जिस जो कि एक दफा एक वार के बीच अच्छी मतलब काफी हिस्सों में टूट चुका है और
वो अगर हम दो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स देखें या दो कंट्रीज देखें जो बाइपोलर्स हैं, ऑब्वियसली इट्स रशिया एंड यूएस। वो अभी अगर चीज़ें चेंज होती भी जाएं, बट जब से हमने होश संभाली है, हमने इससे बड़ा डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं देखा। कोल्ड वॉर, लाइक डायरेक्ट सामने आकर लड़ाई नहीं करनी, बट अब उस कोल्ड वॉर का ये हिस्सा था। और मेरे ख्याल से अगर तो ये रियलिटी है, एंड इफ यू एग्री विद इट, कि जो नेटो की एक्सपेंशन हो रही थी यूक्रेन के लिए जा रहा था, वो किस लिए किया जा रहा था? क्या वो नेट यूक्रेन को पावरफुल करने के लिए किया जा रहा था, या रशिया को चेक रखने के लिए किया जा रहा था? तो मैं इस चीज से सब्सक्राइब करता हूँ कि वो रशिया को चेक करने के लिए रखा जा रहा था। हम्म। यूक्रेन के साथ अगर इतनी कोई मोहब्बत होती, वो कोई हमें नजर आती, तो वो आज भी कुछ उसका अक्स थोड़ा बहुत हमें नजर आता, जो कि ओवल ऑफिस में हमें again, I think this is not limited to just Trump and Vice President JD Vance. This represent that shift of school of thought जो यूएस में नजर आती है, जो भी आपने भी एक्सप्लेन की है, कि वो लाइक हम यूक्रेन के ऊपर सिर्फ एक कंट्री को चेक रखने के लिए उसके डिफरेंट तरीके हैं, उसके डिफरेंट मैकेनिज्म भी हो सकते हैं, डिफरेंट रूल्स हम कर सकते हैं। उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा कि इसका बेस्ट रूट ये है कि जो हिस्टोरिकली हमने कोल्ड वार्स वगैरह सारी प्रॉक्सी वार्स की हैं, बेस्ट तरीका ये है कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको पावर करो, उनको अपने पोल में लेके आओ। उनके जो डेमोक्रेसीज के अंदर माइंडिंग करता रहा यूएस, उससे चीजें अचीव नहीं हो पाई सारी। हम्म। तो ये एक रूट देखा गया कि नेटो के अंदर लेते हैं। अब ऑब्वियसली रशिया उस चीज को कमेंट कर रहा था। वहां पे मेरा ओपिनियन ये था कि वो आप बेशक डायरेक्टली वार स्टार्ट नहीं कर रहे, इन अ वे यू आर गिविंग रीजंस टू वन कंट्री टू गेट अग्रेसिव। सो हम्म। आई थिंक दैट्स व्हाट रशिया डिड। रशिया ने वहां पे अपनी प्रॉपर बिल्डअप बनाई, डिप्लोमेटिक फेलियर्स हुए, डिफरेंट साइड से नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, फिर वही यूक्रेन के ऊपर डिपेंडेंसी थी यूरोप की एनर्जीज की, वो सारी उसने बंद करनी शुरू की। तो एक से एक डिजास्टर शुरू होता गया। फिर इसके डिफरेंट फेज थे, बैटल ऑफ कीव थे, साउथर्न फ्रंट पे दोबारा वार शुरू हुई, मेरिपुल साइड पे शुरू सीज सीज की। इसमें अब ऑब्वियसली बिकॉज इस चीज को 3 साल गुजरे हैं, तो कुछ फ्रंट्स पे रशिया को रिट्रेट करना पड़ा, पूरे पूरे रीजन छोड़ने पड़े। यूक्रेन अ, यूक्रेन ने काफी मुजाहमत की। अभी तक वो उनकी जो आर्मी है वो डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर लड़ रही थी। ऑल दो आई थिंक अभी अगर हम समराइज करें तो डिफरेंट चीज है, बट बिकॉज अभी हम डिटेल लाइक इंडिविजुअल डिटेल्स में जा रहे हैं कि फेज 1 में क्या हुआ, फेज 2 में डॉनबास कैंपेन की उन्होंने अप्रैल से सितंबर 2022 के दरमियान। रशिया को अपने वहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिवाइज करने पड़े। तो है अल्टीमेटली उस रीजन से भी उनको रिकैप्चर करने में सक्सेस मिली। बट है रशिया ने एक स्ट्रेटजी अप्लाई की, उन्होंने डिफरेंट जगहों पे अपनी एनेक्सेशन स्टार्ट कर दी, बेलारूस में साथ में लगा। तो करते कराते अब हम इसको समराइज किया जाए, अब हम इस स्टेट पे आ गए हैं कि, और ये मेरा क्वेश्चन भी है कि हम्म। 3 साल और आई थिंक समवट अराउंड $280 बिलियन, रशिया सम मोर और लेस उसी पोजीशन पे बैठा है जिस पे वो 2022 में बैठा था, और स्लाइटली बेटर पोजीशन जियोग्राफिकली। रशिया लॉस्ट अ लॉट ऑफ देयर ट्रूप्स, यूक्रेन लॉस्ट लॉट ऑफ देयर ट्रूप्स, बट आई थिंक in a total Russia might have lost more. There is I was struggling to find the exact numbers, but like considering how media and everything Yeah, in they are all Russia. estimates, like no one Yeah, knows exact no one numbers. knows exactly. But Hmm. seems like from the campaigns Russia is running for like deployment or recruitment, seems like both countries have lost like significant headcounts. Yeah. और इन्हीं problems की I think JD Vance indication भी दे रहा था, but again I agree with Zelensky के वार के दरमियान किस कंट्री में problems नहीं होती। It's not fair to assume कि रशिया में problems नहीं होंगी। It's highly foolish to say कि यूक्रेन would have smooth sailing. They're going through a war, right? बट इसमें थोड़ी सी मैं कुछ चीजें लिंक करूं तो मुझे लगता है until now रशिया Russia didn't have unfair advantage. It was Ukraine who had advantage, right? Because almost whole international community रैली कर रही थी यूक्रेन के पीछे, फंडिंग वाइज, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट वाइज। इवन यहाँ तक पुश आया कि, एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस, कि हाउ रशिया विल कैन और कैन नॉट विन दिस वॉर, बट लाइक आपने सर्विसेज बंद की, इवन गूगल सर्विसेज पेमेंट्स वहाँ पे आज तक नहीं चल रही।
आपने डिप्लोमेटिक टाइज बंद किए, ट्रेड बंद की। सो आई थिंक इट्स वेरी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ भी दिया जाए, अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करके इलेक्शन से पहले भी चले जाएं, I think what we should do in this episode is to understand what actually went wrong from US perspective. Because ट्रम्प के आने से पहले भी चीजें मेरे ओपिनियन में ठीक नहीं थी। They didn't meet any of their objective. रशिया आज भी जो रशिया का सिंगल पॉइंट और फॉरमोस्ट एजेंडा है कि यूक्रेन कैन नॉट ज्वाइन नेटो, आज वो यूएस को उस एजेंडे पे लेके आएगा। यूएस रशिया की नुमाइंदगी कर रहा है और यूएस कह रहा है कि यूक्रेन ज्वाइनिंग नेटो इज ऑफ द डिस्कशन नाउ। तो Yeah, but Ukraine joining NATO was always a debate. debate but इस motive, right? हाँ, बट दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि हमेशा से डिबेट किसी चीज़ में सिर्फ तब होती है जब दो ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हो। दैट मीन्स कि यूक्रेन की जब भी बात होती थी, तो वो जो एंगला मर्कल और मैक्रोन के साथ उसकी मीटिंग्स थी, पुतिन की, ही बेसिकली मेड इट क्लियर कि ये ना Yeah, करो, ये हमारी रेड लाइन है, ठीक है? तो दैट मीन्स कि जब भी वो डिबेट होती थी तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होती थी। इट्स नॉट which लाइक is कि हाँ वो लाइक ऑब्वियसली वो बायपार्टिसन डिसीजन नहीं था, और नेटो मेंबर्स के अंदर भी ऑब्वियसली उसका एक प्रोसेस है, सारा कुछ है। बट डू वी एग्री कि ये एजेंडा था, एजेंडे के अंदर डिस्कशन थी, वो पार्ट ऑफ प्रोसेस था, बट ये एजेंडा था। आज वो एजेंडा भी नहीं रहा। और अगेन आई एम सेइंग, हम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें से निकाल देते हैं। आई थिंक वी ऑलरेडी न्यू के दे बोथ लाइक दे नॉट जेलेंस्की एंड ट्रम्प। मैंने इतना नहीं था सोचा कि जो कुछ कल ओवल ऑफिस में हुआ, बट इतना मुझे पता था कि दे डोंट शेयर सेम व्यूज, दे डोंट लाइक ईच अदर। बिकॉज ट्रम्प की व्यूइंग शुरू से पता थी हमें कि वो वार शार में ये पैसे निकालना और ये डालना और ये सारी चीजें, इससे एग्री नहीं करता। बट इवन देन आई थिंक इट्स अ बिग फेलियर फॉर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, इट वाज बिग फेलियर कि चीजों को अंडरस्टैंड नहीं किया गया। आज जो ज़ेलेंस्की बार-बार उनको कह रहे हैं ना कि हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन देयर? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन इन्वॉल्व्ड इन लाइक डिप्लोमेसी? It's very easy to push another country into war while not having your direct interest. I would say not having your direct interest because US ने somewhat around, if I'm not wrong, 119 billion, 120 billion, या रफली दैट इज द नंबर। which they are looking to get back through mineral deals and whatsoever, right? So they still have leverage, right? So they didn't, in a way, they didn't lose anything. But on the other side, I think the whole world economy paid a lot. हम्म। यूरोप की एनर्जी शेकअप हो, लाइक एनर्जी पोजीशन जो थी, जो उनकी सोलन वो शेकअप हो गई जो। एंड आई थिंक now we are in a world where we don't, where peace world does not have a leader, हम्म। जिसमें अब, एंड आई थिंक दीज थिंग्स आर गोना बी वेरी सिग्निफिकेंट। लाइक जो हम बचपन में चीजें पढ़ते थे, जिस तरह से मैं देखता था ना, अच्छा हिस्ट्री कैसे मोल्ड होती है, कौन सा इवेंट होता है जिसके बाद दुनिया अपना मूड चेंज करती है, राइट? हमारा, अब मैं इस चीज से भी करता था, हम शुरू से पाकिस्तान में चीजें देखते थे, हम कहते थे यार पाकिस्तान में ये मसला ये है ना कि पॉलिसीज का तो सलसल नहीं होता, एक गवर्नमेंट आती है ना, अगली आके सारा कुछ जीरो कर देती है। हम्म। बट हम यूएस की या फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस की ये तारीफ करते थे कि जो मर्जी बंदा आता है ना, वो नेशन के इंटरेस्ट को नहीं जाने देता कहीं पे। हम्म। अब मुझे लगता है, जो कि काफी हद तक शायद आप भी एग्री करो, कि यूएस ने एक तो अपने इमेज का, क्योंकि अब हम उस टाइम से इस टाइम में आ गए हैं कि जहाँ पे ये जो वर्ल्ड लीडर मीटिंग्स होती थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, ये सारी कोरियोग्राफ होती थी। हर चीज, छोटी से छोटी चीज, डिटेल्स को मतलब सोच समझ के केयरफुली प्लान करके दिखाया जाता था कि ये मैसेज आए। उसके बाद हम जो कुछ कल देख रहे हैं, लाइक ठीक है, ये इसमें बहुत बड़ा रोल ट्रम्प का भी है, बट लाइक अब उसमें चीजें ऐड होती जा रही है ना। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू ट्रम्प नाउ, इट्स बिकमिंग अ होल यूएस मोड। अब अगर आप कल यूएस का सोशल मीडिया देखो इस सारे इवेंट के बाद, तो आई थिंक इन, especially Trump voters, obviously, but in general, the public, they loved it.
क्यों? उन्होंने कहा अच्छा आपने हमारे कंट्री में दोनों आके, साइड हैं। मैं दोनों साइड्स हैं, बट आई थिंक द अदर साइड इज वेरी थिन साइड इन माय ओपिनियन, आई माइट बी रॉन्ग देयर, बट एक ओपिनियन जो मैंने देखा है इसमें वो ये है कि वही नैरेटिव कि आप हमसे पैसे लेते हो और आप हमें आके लेक्चर दे रहे हो। ठीक लेक्चर दे रहे हो। हम्म। भाई वो बात तो ठीक है, बट आप एक बड़े प्लेयर थे इस बार के, आप स्पॉन्सर थे इस बार के, और आपने एजेंडे सेट किए, आपने टारगेट सेट किए, आपने पूरा मतलब स्ट्रेटजी बनाई इस वॉर की, तो आप अब ये नहीं कह सकते कि हमने बस पैसे दिए और हम साइड पे हैं, और आप परवाह नहीं कर रहे कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी, या वो अब इट वाज वेरी पेनफुल टू वॉच द होल प्रेस कॉन्फ्रेंस कि उसको कैसे पुश किया, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल से पहले तक मैं भी कोई जेलेंस्की का बहुत बड़ा फैन नहीं था, लाइक आप like follow I wasn't a fan of this prolonged war, इसकी जो चीजें थी शो पावर करनी थी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पता था आई वाज ऑफ दैट पॉइंट ऑफ व्यू के जो मर्जी कर लो जियोग्राफिकली आप रशिया को मजीद स्क्वीज नहीं कर सकते। रशिया एक एंग्री बियर है जिसको अगर आप साइडों से पुश करोगे, आई थिंक हमारी आपस में भी ये बड़ी डिस्कशन हुई हैं, मैं कहता था कि उसको डिप्लोमेटिकली इंगेज करो, ये आप थ्रेट करोगे यूक्रेन को डाल लोगे, ये कर लोगे, आपके पास पोलैंड है, रशिया को यूरोप से दूर तो नहीं बैठा हुआ, हम्म। फिनलैंड साथ है, तो आप कितनी कितनी दफा ये चीजें कर सकते हो, अगर वो नेटो ज्वाइन भी कर ले, व्हाट इफ आज हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि जब नेटो का अपना वजूद ही थ्रेटन हुआ हुआ है, राइट, सो ये लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन नहीं थे। और कमिंग बैक टू ज़ेलेंस्की, मैं भी इस पॉइंट ऑफ व्यू का था कि लाइक आई डिडंट लाइक कि इतना ज़्यादा पैसा इस वार में बर्न हो रहा है और इतनी ज़्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी इस वार से हिट हो रही है, बट आई फेल्ट बैड फॉर हिम, लाइक यू कैन डू दिस टू अ फ्रेंड, वो यूएस का फ्रेंड है, वो आपका पार्टनर है, आपने उसको एंगेज किया वार में, आप उसने आपका साथ दिया है, उसने अपने मतलब ही इज फाइटिंग द वॉर, ठीक हम्म। है उसकी वार है, बट ऑब्वियसली आप पोलिटिकल एलाइज होते हैं, जियोग्राफिकल Okay, एलाइज so होते हैं। so going back to actually of like a lot of questions kept popping up. So one obvious question is because ये चीज़ बहुत कही जा रही थी एटलीस्ट 1.5 साल पहले कि ये तो यूएस ने जो है वो यूरोप और यूक्रेन को अपने पीछे लगाया हुआ है। सो आई क्योंकि इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त यूएस अपने आप को डिस्टेंस कर रहा है and या European leaders are rallying behind Zelensky, so much so कि even Canada is also showing support. Why do you think is that? अगर ये सब US कर रहा था, तो why is Europe still hell bent on assisting वेरी Ukraine? गुड, या वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक सब कुछ यूरोप नहीं कर रहा था, लेकिन यूरोप लीडर था, US एक नहीं पीस कर वर्ल्ड, सॉरी जो यूएस माय बैड, सब कुछ यूएस नहीं कर रहा था, बट यूएस एक लीडर था इस सारे में, लाइक अगर हम फंडिंग की भी अभी फंडिंग की जिसको यूएस लोन कह रहा है, तो यूएस तो बिगेस्ट लोन फंडिंग प्रोवाइडर नहीं था ना, एड प्रोवाइडर नहीं था, वो ईयू था, ईयू ने 138 दिया और आप 119 यूएस ने दिया, ऑल दो लाइक ऑब्वियसली ईयू इज लाइक अ यूनियन और यूएस एक सिंगल कंट्री है, तो उस सिंगल कंट्री होने की वजह से यूएस एक लीडर था, यूएस का एक लीडर वाला रोल था, विजन था कि ये चीजें ऐसे होनी चाहिए, यूरोप के अंदर ये रोल होना चाहिए, तो यूएस वाज डिक्टेटिंग इन अ वे के एंजेला मार्कल, मैक्रोन, दे वांटेड टू गेट, अगर तुम्हें शायद शुरू में भी याद हो जब ये वार स्टार्ट हुई है, जब ये पाइपलाइन के इशू स्टार्ट हुए हैं, आई थिंक इमरान खान जब वहां से आया उसके बाद सबसे पहला जो लीडर गया वो मैक्रोन था, फ्रांस की तरफ से वो गया, I think so. Macron and I think Netanyahu ने भी विजिट या किया था, या सो विजिट किया है, दे ट्राई टू, बट उस टाइम पे भी जो पुशबैक भी था वो यूएस साइड से आता था, उसने कहा नहीं नहीं ये वार आगे चलेगी, yeah, तो yes. I ठीक है, agree. So what bugs me is अब अगर why is Europe not यूरोप के लिए इस वक्त बहुत easy नहीं होना चाहिए, they should just back down. सेम नो, आई थिंक नाउ दे एक इस चीज को इससे देखा जाए कि मैं आपको किसी चीज में इन्वॉल्व कराता हूँ, आपके भी इसमें इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि आपका इंटरेस्ट नहीं है क्या, अब जो एक वार स्टार्ट हो गई है, अगर हम अब दो ऑप्शन है ना, या तो आप वापस जा सकते हो, एक ऑप्शन ईयू के पास ये होता कि हम वापस उस पोजीशन पे चले जाते जब हम तुम्हें कह रहे थे कि ये वार नहीं इस तरह से लड़ी जाए, उस वो Okay. ऑप्शन तो आप एक्सरसाइज कर नहीं सकते, अब एक ही ऑप्शन है, आप जो चीज शुरू कर दी है उसको कंप्लीट किया जाए, हम्म। हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन भी तबाह किए हुए हैं,
हमने पैसा भी 138 बिलियन इसमें लगा दिया। हमने लोगों को भी बता दिया है कि रशिया हमारा दुश्मन है, जो कि आज से नहीं, बड़े सालों पहले से है। अब ऑल ऑफ सडन उनकी भी एक अपनी पोजीशन है ना, वो भी एक सेम वर्ल्ड है। वो कहते हैं कि हमारे लिए ये ऑप्शन मेक सेंस नहीं करती। अब हम जिसके पीछे हैं, जैसे कनाडा, कनाडा के तो कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट ईयू वाले नहीं है ना, बट कनाडा हम्म कंटिन्यूसली सपोर्ट करता है हम्म यूक्रेन को, तो वो कहते हैं हमारी वही पोजीशन है। हम्म हम ड्रामेटिकली अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे अनलेस, क्योंकि कंडीशन तो अगर आप देखा जाए तो इस सारे स्पेक्ट्रम पे चेंज क्या हुआ है, वो सिर्फ यूएस की पोजीशन चेंज हुई है आउट ऑफ नो वे। तो रशिया ने कि अपनी जो उनका एजेंडा है, जो उनकी डिमांड्स हैं वो चेंज की हैं? क्या नहीं रशिया ने अपनी टोन चेंज की है? क्या यूक्रेन ने अपनी टोन, कुछ कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ यूएस यूएस का प्रेसिडेंट चेंज हुआ है। या तो यूरोप कह रहा है वो आपकी प्रॉब्लम है, वो आपके साथ हुआ है, हमारे साथ वो नहीं हुआ, हमें आपने ट्रैक पे डाला है, हम उस ट्रैक पे आपके साथ आए थे, तो हम आज भी, सो वो पुश बैक है, विच आई थिंक मेक सेंस। so you don't think that, so if we game it out, let's say आज जो है ना वो ट्रम्प जो है ना वो फुल ऑन हैवी हैंडेड जाता है यूक्रेन के ऊपर, और वो कहता है लाइक जस्ट शट अप, 20% एरिया तुम्हारा रशिया के पास है, दे विल कीप दैट, तुम नेटो के अंदर शामिल नहीं होगे, एंड डीमिलिटराइज करेंगे यूक्रेन को, राइट? ये बेसिकली डिमांड्स है, सैंक्शंस उठा लेंगे रशिया से, रशिया की बेसिकली ये डिमांड्स हैं, राइट? सो लेट्स सपोज ट्रम्प अगर इस इन ये सब कुछ करता है, तो यूरोप को इन सब में क्या दुखता है? यूरोप को अगेन वही पिछली बात आ गई ना, कि यूरोप ने जो इसमें इन्वेस्टमेंट्स की हैं और यूरोप की समूह से फिर अब इसमें रशिया ने तो कुछ लूज नहीं किया ना। हु हैज अपर हैंड नाउ? तो फिर यूरोप उस सारी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में कहाँ पे आता है? यहाँ तो आप यूरोप को एंगेज करो ना। ट्रंप का करने का तरीका भी तो ये है ना, ट्रंप ने किसी को, मैक्रोन के विजिट के अलावा और यूके के प्राइम मिनिस्टर, उनके भी अपने एजेंडास भी थे, ऑल्दो लाइक दिस मस्ट हैव बीन वन ऑफ देम। ये जो सारा प्रोसेस भी किया गया है, ये एक ऑकवर्ड पोजीशन है ना। आप इसको बड़े पर्सनल लेवल पे भी सोचो कि दो दोस्त थे, उन्होंने तीसरे के साथ लड़ाई की, अब जो पहले वाला है वो तीसरे के साथ सही इलाज करना चाह रहा है विदाउट इन्वॉल्विंग द सेकंड वन। तो उनकी तो केमिस्ट्री, यूएस तो जान छुड़ाना चाह रहा है ना, यूएस तो अगले रिलेशंस को देख भी नहीं रहा। हम्म लेकिन रशिया रशिया की यूरोप ये रशिया की और ईयू की जो सेटल वो जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है। ईयू को एक सेफ सेफ पैसेज चाहिए जिसमें वो रशिया के साथ एंगेजमेंट रख सकें। अभी वो किस तरह रख सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? अगर ये सारा कुछ पैन आउट होता है, यूक्रेन को छोड़ दें आप, रशिया ईयू के साथ क्या करेगा? क्या वो उनके साथ, डू यू थिंक दे विल स्टॉप मैंडलिंग, और डू दे स्टॉप डूइंग थिंग्स व्हिच यू हैव बीन अक्यूजिंग देम? या नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा ये बात करेंगे तो ईयू की पोजीशन क्या होगी इसमें? ईयू के पास तो डायरेक्ट डिपेंडेंसीज थी ना, ईयू ने तो वो डिपेंडेंसीज खत्म की हैं। तो कल को ईयू कहता है फॉर एग्जांपल दोबारा कि लेट्स डू दिस पाइपलाइन, या कुछ और कहते हैं, तो वो उसमें रशिया का रिस्पांस क्या होगा? इट विल गो क्योंकि अहेड। रशिया फिर रशियन टर्म्स पे होगा ना, फिर रशियन, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस में हमेशा क्या होती है, अपर हैंड सबसे, आप हर कंट्री को अपने साथ लोअर हैंड रखना चाहते हो। whole EU will be at lower hand with Russia. They don't want that equation, in my opinion. ओके। Otherwise, अगर अगर सिक्योरिटी, लेट्स से यूएस रशिया को एक एग्रीमेंट में जो पीस डील होती है, उसमें कर देता है कि जो कुछ आपने एनेक्स किया हुआ है, जो आपकी करंट पोजीशंस हैं, दैट्स द डेडलाइन और दैट्स द फाइनल लाइन। उसके बाद इन अ फेयर वर्ल्ड ईयू को तो कोई डायरेक्ट थ्रेट रशिया से नहीं होनी चाहिए ना, कोई एक्टिव वार नहीं रहेगी। तो फिर ईयू को प्रॉब्लम क्या रहेगी? ईयू को प्रॉब्लम मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम रहेगी। ईयू ईयू फिर उस सारे मामले के अंदर साइडलाइन हो गया। अब फिर रशिया डायरेक्टली या यूएस के साथ, और फिर यूएस डिक्टेट कर रहा है रशिया अपनी डिमांड दे रहा है यूएस को, और Right. फिर इस तरह So, कंप्लेंट कर रहा है। so yeah, I think it is like perfect spot for me to basically present the other side of the argument, हम्म। where basically Europe sees Russia as a threat. So, the other side of the argument, it basically begins when you start looking at Russia 1950 onwards. So, 1950
in the 20th century 1900 से लेके 1991 तक जब रशिया के टुकड़े हुए हैं, यूक्रेन at 5 different points उन्होंने अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश की है रशिया से। व्हाट डज दैट टेल? दैट टेल्स कि यूक्रेन के अंदर कुछ लोग एग्जिस्ट करते थे जो अपने आप को नेचुरली रशिया के साथ अलाइंड नहीं समझते थे। देन कम्स फास्ट फॉरवर्ड कर लें तो 1991 के अगस्त में जो है वो यूक्रेन पार्लियामेंट बेसिकली stood ground and they basically declared independence. So अभी रशिया डिसबैंड नहीं हुआ, रिमेंबर ये हो रहा है अगस्त 1991 में, एंड दिसंबर में रशिया डिसबैंड होता है। व्हाई? बिकॉज रशिया एट दैट पॉइंट वाज चैलेंज्ड इकोनॉमिकली, दे वांटेड टू होल्ड ऑल ऑफ देयर स्टेट्स टुगेदर। अब वो स्टेट्स कौन सी हैं? ये सारी लेफ्ट साइड पे ये बेलारूस वगैरह और ये यूक्रेन वगैरह, लेकिन उस राइट साइड पे भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ईस्टर्न साइड पे देयर आर बंच ऑफ इस्लामिक स्टेट्स जो बाद में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, वो सारी लोग बनती हैं, राइट? क्या सो Ukraine, if we look at the history of kind of the Russian Empire, Ukraine and these Western states, Poland and all of these, they were a lot naturally aligned with Russia in the sense कि language same थी, culture same था, एथनिसिटी religion same थी। एथनिसिटी So the when in August 1991 Ukraine went out of Russia's hand, Russia basically threw their hands up and they said that okay, well, अगर यूक्रेन ने पार्ट नहीं रहना तो देर इज नो पॉइंट कि हम ये ताजिकिस्तान और इन सब को रोक लें। एंड वो 19 दिसंबर 1991 में द प्रेसिडेंट वेंट ऑन एयर और वो सारी चीज हुई थी। सो दैट कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। सो 1991 से यूक्रेन एक काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्री है, एंड देन रशिया वेंट थ्रू वेरी रफ पैच फॉर of course आपकी country disband हुई है तो 10 12 13 years या ago, and then 2 मिनट Putin came around 1999 2000, and if you look at, so the one of the best ways to remove bias is to hear things direct from the horse's mouth. So like टाइमलाइन पे ना, अगर आप उस स्टेटमेंट्स देखें ना पुतिन की, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे आर वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स यूरोप स्लैश यूएस। सो मच सो दैट 2008-9 तक इवन जो है वो देयर इज significant interest from Russia to be part of EU, right? Forget Ukraine and all. EU और NATO, EU. that's a different story then. Yeah, but EU, but still, if you have economic alliance with a bunch of countries, that means But they're your how many friends. times have Russia stopped Ukraine from joining EU? Zero. Yeah, zero. Because That that doesn't matter. Yeah, but that doesn't change the fact that Russia wanted to be a part of this big economic क्योंकि alliance वो शुरू because से it उस benefited them. क्योंकि वो शुरू से उस अलायंस का हिस्सा थे ना। Yeah, तो but then they ईयू gave को up. ईयू कहने से पहले भी जर्मनी के अंदर जो उनकी इन्वॉल्वमेंट थी वो ईयू का हिस्सा थे। Yeah, but then That they was gave their up the natural idea. alliance, yeah. Yeah, but Because then they gave up the because they idea. because they Why? got split. Because they got split. No, that I think Because that's where. Germany got merged, they got split. That changed the whole equation. No, I'm talking about 2008-9. So या तो हिस्टोरिकली यही है ना कि अब आप फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान एक टाइम पे एक कंट्री थे। आल तो ये हुआ नहीं है, बट अगर हमने रीजन में किसी के साथ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन करनी है तो हु शुड बी आवर बिगेस्ट पार्टनर? बांग्लादेश एंड इंडिया। सो इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग चाइना वी शुड बी आस्किंग देम टू ज्वाइन अस। सो yeah, क्योंकि then why not do it then? बिकॉज बिकॉज मेरे ख्याल से इसमें जो मेरा ओपिनियन है, आपने शुरू से रशिया को साइडलाइन किया है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। रशिया जब से स्प्लिट हुआ है, अभी अगेन कोल्ड वॉर में चले जाओ, जिस तरह का प्रोपेगेंडा पुश किया गया जो कि अभी शेमफुल हो गया, यूएस के लिए खुद से अब्सॉर्ब करना।
एंड इट इज इंटरेस्टिंग यू मेंशन कि रशिया की जो स्टेटमेंट्स थी वो फ्रेंडली थी हिस्टोरिकली। आई एम नॉट श्योर कहाँ पे मैं, बट कहीं पे ये चीज पढ़ रहा था कि हिस्टोरिकली वो कंपेयर कर रहे थे इस कोल्ड वॉर को इस नई इक्वेशन के साथ। पूरी कोल्ड वॉर में आपको कहीं पे भी रशिया अग्रेसिव नजर नहीं आएगा, एज अग्रेसिव एज यूएस वाज। तो अगर स्टेटमेंट्स की सिर्फ बात की जाए, यू रशिया तो हमेशा से, इसलिए वो तो आप उसका पोर्ट्रे भी देखो ना रेड आर्मीज का भी, उसमें भी यही दिखाएंगे कि वो बड़े लाइक सेटल से बड़े स्मूथ टॉकर्स, बट देन दे डू इविल थिंग्स बिहाइंड द डोर्स। सो रशिया का जो पूरा रोल था उसमें वो यही था, वो शुरू से यही कहता आया है कि हम इकोनॉमिक लिबरेशन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, ये नेटो को हमारे दरवाजे पे ना लेके आओ। एंड दिस इज व्हाट आई थिंक इज नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर ऑब्वियस कि एक कंट्री को जब पुश करोगे उसमें ग्रे, और उसमें ग्रे चीजें हैं, ब्लैक एंड व्हाइट चीजें नहीं है। आप वो देखोगे जो आपको नजर आती है क्योंकि आपने अपना एजेंडा पुश करना है। Okay, so वो can तो I? ईयू का ज्वाइन करने में भी रेडी थे, उनको ईयू से भी उसका मतलब प्रॉब्लम नहीं है। Yeah, so can उनको I? प्रॉब्लम बननी शुरू हुई जब आपने उनके दरवाजे पे नेटो लाकर बिठानी शुरू की। Can I finish my thesis and then we can get to the या questions श्योर। of it? So, um, in my opinion, everything changes in 2011. Why? Because हम्म in 2011, elections happen, Putin wins, and people are out on the streets because they know, like the rest of the world, के Russian election में क्या हुआ है. हम्म Um, at that point onwards, Putin gets like develops this understanding that this was an attempt from the US to overthrow my government or West to overthrow my government. For हम्म let's put it aside कि like इसमें कितनी reality थी और कितना like जो थी वो like exaggeration थी. But from that point on, Russian position like absolutely changes. They are now all of a sudden very tough on anyone joining NATO. Uh, they go after Georgia. They बिकॉज go दे हैव after मोर स्टेबिलिटी Ukraine. नाउ। They go after Ukraine. Um, annex Crimea. Um, and the whole thing continues and culminates eventually in them invading Ukraine. So हम्म to draw the conclusion, my thesis is that Russia in Russia by and remember throughout this there is this story of Alexei Navalny going in Russia where he is like this opposition leader trying to confront Putin, is poisoned a number of times, is put into prison a number of times, eventually dies in 2024. So this is the domestic scene that's going on in हम्म Putin, going on in Russia, where Putin is trying to consolidate his power at all times. And I think the all of the annexation of Crimea, going into Georgia, and eventually in 2022 invading Ukraine was to consolidate that power to show their public. Because when you are unpopular, what do you do? When your economy is doing bad, what do? You go या to बट war. अगेन आई डोंट गेट दिस। सो यूएस को यही पिछले 5-10 सालों से यही मुझे एक ऑब्सेशन की समझ नहीं आती। व्हाई डू वी केयर सो मच कि यूक्रेन ये रशिया के इलेक्शंस में क्या हो रहा है, जबकि लाइक यू हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू वरी अबाउट। व्हाई ये सारा नैरेटिव बिल्डिंग थी। इन माय ओपिनियन दिस हैज नेवर बीन मोर क्लियर। एंड आई थिंक the way forward is also to stop like portraying countries in a way के oh like यहाँ से ये बंदा आता है इसकी ये power है, like do you have control on their democracy? Does US have control on their democracy? If they No, don't, but they should then it just shut goes. up their mouth, right? And stop Then putting countries into war. so okay, so then the counter argument would be then Russia should care less about whether Zelensky is the prime minister or someone else's. Then it goes both That's ways. their fight to, like for example, and again as I said earlier,
जेलेंस्की की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जेलेंस्की खुद से एक अनपॉपुलर लीडर इस टाइम पे, बट दैट्स आई डिडंट मेंशन इट वन टाइम अंटिल नाउ, बिकॉज दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम टू वरी अबाउट। ये यूक्रेन की प्रॉब्लम है, राइट? अब रशिया, अब यूएस, अब देखो, जब आप दूसरे कंट्रीज को अलाउ नहीं ना करते कि वो आके आपको फ्यूचर थ्रेट के बारे में भी बात बताएं, जो जेलेंस्की ने कल बात की है कि यू हैव नाइस, तो आप उसके ऊपर चढ़ दो रहे हो। आप दूसरे कंट्रीज को फिर किस तरह से तुम बोलते हो? दिस हैज बीन माय होल प्रॉब्लम। जिस तरह से I हम चाइना agree. को देखते हैं, जिस तरह से हम यूएस को देख, I understand your नहीं, problem. The part that I don't understand is why you don't have that problem with Russia as well. I have problem with Russia, but it's not my problem to solve. I can just feel about it. I can just form opinion. But then US goes, tells you this is the base we are doing something. 2 years later they say, oh oops, everything we have been saying is wrong. So now where goes my feelings? Okay, so that means Didn't remember that time 2022, even when we were discussing, you were of that school of thought ke रशियन इकॉनमी ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। आई वॉज ऑफ दैट स्कूल ऑफ थॉट कि रशियन इकॉनमी बर्दाश्त कर लेगी, बिकॉज इवन दो Putin has been portrayed as a madman, he is a madman in a way, in a many ways. Economically, he's not a madman. He has been running this country in that, and now the economy is stayed hot. My point is, यूएस जो हमें सारा नैरेटिव बताता है, उसको भी फिल्टर करने की जरूरत होती है। रियलिटी ये नहीं है कि वहां so पे कि yes. यूएस के अंदर क्या क्या प्रैक्टिस मिसयूज नहीं हुई इलेक्शंस में। यूएस के अंदर जो अटैक्स हुए हैं, ठीक है, पार्लियामेंट से के ऊपर, ये सारा कुछ, ये चीजें रशिया में होती, तो क्या हम उसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते? क्या हम उसको, जो केसेस ट्रम्प के अगेंस्ट थे, डू यू थिंक दोज केसेस वर लाइक वेरी सीरियस केसेस? वो केसेस फारिग हो गए हैं ना। माय माय होल पॉइंट इज, ऑल दो हम कह रहे हैं कि हम अपनी बायसनेस को साइड पे रख के सारी चीजें देखें, हम नहीं देखते, एंड इट्स ओनली ह्यूमन नेचर। हाँ, हम but नहीं देखते। it's on the both side ना। Do या you बोथ साइड्स पे do है, you बट think किस do साइड you, के पास बड़ा लाउड स्पीकर है? do you दोनों के पास है? नहीं नहीं Do नहीं 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 नहीं, do you यूएस और do you रशिया की। think do you think let's walk it through. Do you think there is zero propaganda on the from the Russian side on the social Oh, media? there is propaganda from all countries. The problem is who has the biggest platform. How many Russian controls media you are watching or consuming? No one knows. How much? Yeah, No exactly. one No, knows. you How do no? know. You do know. No, I Can don't. CNN run Russian propaganda? Can BBC run Russian propaganda? I'm not following CNN on X. I'm Whatever following. you're following, I'm whatever you're following, I'm i'm following. pretty sure i'm pretty sure we are more exposed to American propaganda, and we can go like a full episode on this. I can present you proper thesis on that. Yeah. But So let's stay focused on where we were. We can again debate the economy. It's like a totally well, length. it's not a debate anymore, in my opinion. It remained hot, it remained attractive, it remained stable. Yeah. That's the So reason. That's the reason Russia has this upper hand right now. That's the reason Trump is worried. If you like, Trump has a way of, okay. I also wanna overview this whole thing with you. The way of Trump doing things, the way of Trump trying to end this war. I don't agree with it, but I agree on the philosophy of it. I agree that this war was never winnable. Do you think अगर ये टर्म अगर ये ट्रम्प ना आता और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ही कंटिन्यू करती, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हैरिस और yeah, जो कि, डू यू थिंक war would have continued. ये वार कंटिन्यू तो रहती है ऑफ कोर्स, बट क्या ये विनेबल वार थी? So it depends what you call winnable. विनेबल आई थिंक वेरी क्लियर है कि रशिया की जो 6 डिमांड्स, उसमें से पहली डिमांड ये थी, और यूक्रेन की पहली डिमांड ये थी कि जो उन्होंने एरिया नेक्स किया वो छोड़ा जाए। ठीक है, Hmm. रशिया की पहली डिमांड ये थी कि यूक्रेन कभी भी नेटो नहीं ज्वाइन कर सकता, और फिर जो जो हमने अनेक्स किया हुआ है, जो ये हमारी सॉवरेनिटी लाइंस है, ये हम नहीं छोड़ेंगे। तो यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तभी वॉर विन थी ना, क्योंकि हम तो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या Yes. यूक्रेन वो सारी चीजें वापस ले सकता था? Yeah. So I want to हाँ, explain, well, not explain, like it will be like a couple of liner. Okay,
why US wanted to drag this war, because US hated Russia invading Ukraine in the first 3 months, but from that point onwards, a lot of things changed when स्टार्ट की प्रोजेक्शंस सबकी ये थी कि 3 हफ्ते लगेंगे एंड रशियन आर्मी विल बी इन कीव, Yeah, राइट? बट देन एवरीथिंग गॉट चेंज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। यूएस जो जो and at that time, I just sorry to cut you जो there. देख रहे थे वो दे थॉट दैट ये अब बन गई है वॉर ऑफ एट्रीशन, जहां पे ये लंबी चलेगी एंड इट विल इवेंचुअली, it was a basically a game US of estimated 1 year. let's US resource. estimated 1 year कि ये वार हम यूक्रेन 1 year में लाइक हमने सारी इकॉनमी चोक कर दी है, रशिया को सारी साइडों से हमने बंद कर दिया, 1 साल से पहले ये स्टोरी एंड होगी. दिस इज आल्सो द फ्रस्ट्रेशन ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन. Yeah, so timelines, I think, like no one should give, and किसी की इकोनॉमी कब ड्रेन करेगी ये आपको नहीं एग्जैक्टली 100%. लेकिन नाउ अगर नाउ वी जाएगी आर that much time। टाइमलाइन. जब आप टाइमलाइन नहीं आप निकाल सकते इतनी बड़ी वार्स की, तो आप कंटिन्यूसली पैसा नहीं डाल सकते. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग आई but एग्री that विद ट्रूथ फिलॉसफी. that goes on both ट्रम्प, sides। या बट मैनेज. देखो, आप एक साइड से 280, हु इज मोर इफेक्टिव? एक साइड से आपने $300 बिलियन लगा दिए हैं, एक साइड से इकोनॉमी हॉट रह रही है. हु कैन गो लॉन्ग? हु कैन गो लॉन्गर? हु कैन सर्वाइव दिस? The I'm one not way, saying both countries have. I think it should be established here so because can I, it's a war time. Both countries have problem. you're asking question, let me answer it. You said Mhm. that there are two sides who are both putting money in, which side can last longer? I would say the side where inflation is low and interest rates are low. But Because economy is hot. economy is hard, that's a problem। आपका इंटरेस्ट रेट 21% पे है, Yeah, आप but इन्फ्लेशन ग्रोथ, आप 15 ग्रोथ में जा रहे हो ना, आप ग्रोथ में जा रहे हो, आप पैसा निकाल रहे हो अपनी वार के लिए. जब That's the style of economy you are adopting. when you are growing in the when you, जब आप ग्रोथ मोड में होते हो तो आपकी इन्फ्लेशन गेट्स इवन वर्स, दैट इज द So you're प्रॉब्लम। saying US could have won this war in a way, right? क्योंकि वो पैसा डाल सकते थे और US रशिया नहीं था डाल सकता. आई थिंक या दे, Why Trump doesn't want to win this war? because he has a different policy, that's why I'm saying कि अगर ट्रम्प के अलावा forget, okay, let me be this clear, अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बनने के बाद उसका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है दैट इज मार्को रूबियो, ठीक है, Mhm. जिसके कल इमेजेस आ रहे थे जेडी वैंस के Yeah, साथ। yeah. अगर ट्रम्प उसको हैंडल करने देता ना ये सिचुएशन, उसकी भी पोजीशन मोर और लेस डेमोक्रेट्स वाली होनी थी। चलो, इस अब ये वन तो ऑफ व्हाट एंड इफ है ना. यू थिंक कि वो जीत सकता था. मैं कहता हूँ कि अगेन दिस इज आल्सो द सेम थिंग जहाँ पे यूएस ने कहा था कि 1 साल में हम ये जीत जाएंगे. दिस इज एन टाइम अनरीजनेबल वन, टाइम बट अगेन टाइम दिस इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, राइट? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और ये फ्यूचर की बात है. नो वन कैन प्रिडिक्ट इट. या सो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हाई डोंट वी जस्ट गो बैक और हम उन 3 सालों को देखें जो कि गुजर चुके हैं, हम्म और उसमें से भी हम अगर बाइसनेस निकाल दें, हम्म who had achieved more, Russia or Ukraine, in that 3 years of war, which we have seen? so the data that we have, Russia has done better, Yeah, but that's again my there is point. this caveat, the data that we have seen। I think more than what I have seen, I even think those people who one has thing, been critical of like one thing that I would really want to look at is the actual economic data coming out of Russia. So those are the things that we are not sure. There are some okay, things that in my humble opinion, this is a mentioned, wrong way of looking at a war. Nobody looks at a war through economy perspective. Yes, you're choking an economy so that they can lose the war. But if they're winning the war with a choked economy, even then you are a loser. That's my way of seeing things. so agar so let me clarify this, agar Russia will militarily win this war in 4 से 5 साल, फिर इकोनॉमी मैटर नहीं करती, आई एग्री विद यू। बट अगर यूएस का प्लान ये था कि ये वॉर ऑफ एट्रिशन एंड इट्स गोना ड्रैग फॉर 10 12 15 years, then They Russia should can, have made it clear to Ukraine and they should have planned that support as well, but it's, I don't right? know what they said to Ukraine। So I think, yeah, obviously because we have a like difference of opinion on how we see the future, and that's understandable because so many things can go wrong and so many
things can go in your favor. But I think we can agree that this is a big mess created by US. Mm-hmm. Europe, EU, in my opinion, they want to fix this in a way which is workable for them Mm-hmm. because they have more stakes in that region with collaboration or with fear or with like all the security threats from Russia than US has, or that's how US at least sees it. I think looking forward, I want to ask you this question, and I think it's very clear that US is out of picture. This was start of an ending or ending of a start, Yeah, we right? don't. So my theory about Trump is when Trump says anything, I wait for like 10 days and see if it still Okay. sticks. So what happened in that's fair because Trump has a track record of doing things or going, and then he will find a sweet spot in between or somewhere. So I just want to assume for a moment that US is out of this war. They want out of this war. The sport is ending. So that 120 billion or that kind of sport. EU has still shown that sport, especially since yesterday. Yeah. Do you think Ukraine, and I know Ukraine is obviously in a very bad position right now. The only winner we see in that situation, even bigger than US, is Russia. Hmm. What are options for them? I feel bad for like all the people they have lost. I feel bad for all the Options destruction they have for Europe. for Ukraine. Like how do they go forward? One option is obviously they accept Trump's uh, all the demands. They give them minerals. They sign that peace agreement with Russia. The other option is to only rely on all the fundings they can have from EU. Do you think they So can move forward? सो यूक्रेन के सो कुछ चीज़ें जो हैं उसके ऊपर मैं क्रिस्टल क्लियर हूँ। अगर आप यूक्रेन को के ऊपर से सैंक्शंस हटा रहे हो ना, देन लाइक उनकी बाकी की डिमांड्स भी मान लो क्योंकि फिर बाकी सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। बिकॉज़ लेट्स से रशिया के आप ऊपर क्या यूक्रेन के ऊपर? सॉरी रशिया के ऊपर। रशिया के ऊपर। अगर आप रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हटा लेते हो ना, बिकॉज़ लाइक आई एम ऑफ द ओपिनियन के ये 2 1 डेढ़ साल के बाद ये बन गई थी वॉर ऑफ एट्रिशन जिसने 1 डेकेड चलना था, ठीक है? हम्म। तो अगर आपने इस वॉर को 1 डेकेड खींच के उनको रिसोर्सेज़ वाली साइड से ड्रेन नहीं करना, देन ये पॉइंट या मिलिटरीली आप ये वॉर आप मिलिटरीली नहीं जीत सकते। आई फिर एग्री। आपको लाइक यू शुड फोल्ड राइट अवे, राइट? सो दैट इज़ वन थिंग। सो इवन इफ यूएस बैक्स अवे, लाइक यूएस से कि हम इसमें मिलिटरी हम आपकी लेट्स से मिलिटरीली मदद नहीं करेंगे और हम आपकी इकोनॉमिकली मदद नहीं करेंगे, then I think the best bet that Europe and Ukraine has is to try to convince them कि okay, fair enough, सॉरी। तुम्हारी शुरू से कंप्लेन ये है कि हम जो हैं वो अपना शेयर फेयर शेयर चिप इन नहीं कर रहे और तुम कर रहे हो। ओके, सो यू स्टे अवे फ्रॉम इट, बट कीप द सैंक्शंस ऑन एंड लेट्स ड्रैग दिस वॉर। This with this kind of position, maybe Europe has still their chances are slim with US out of it, but But this still, can still go yeah. sometime. Yeah. Okay. Very, very, very good answer. अब इसका अगेन एक और क्वेश्चन निकलता है जो कि काइंड ऑफ लाइक मिस्ट्री है मेरे माइंड में कि अगर यूएस को सिर्फ यही मसला था कि हम पैसे बहुत ज़्यादा दे रहे हैं एंड वी कैन यूज दैट मनी समवेयर इंटरनली विच आई एग्री। तो ये तो इस तरीके से भी हो सकता था ना कि आप तीनों पार्टनर्स को उठाते, भाई तीनों पार्टनर्स यूएस बैठता, यू बैठता, यूक्रेन बैठता, आप कहते वी कैन नॉट फंड यू द वे वी हैव बीन फंडिंग, हमारी पॉलिटिकल सपोर्ट रहेगी, So मॉरल सपोर्ट yeah, रहेगी, ये क्यों नहीं किया उन्होंने? so again, I cannot answer this question, and the reason is till this very moment, I don't know what Trump's want out of it because हम्म। few things are clear. One thing is कि again, let's say अगर आप negotiation पे भी जा रहे हो, if you're trying to work like as a mediator between Ukraine and Russia, so आपने तो basically ट्रम्प ने रशिया की ऑलरेडी 5-6 डिमांड्स मान ली हैं। मान लीजिए बल्कि आप तो ये कह रहे हो कि यूक्रेन ने वार स्टार्ट की है, राइट? या इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, आप तो उस डिस्टेंस पे जा रहे हो जो रशिया ने भी इमेजिन नहीं किया था आप करोगे, आई थिंक राइट? रशिया माइट हैव बीन अ लिटिल शॉक, या। सो what I want to see is what is at the tail end of it. Let's say US does all of that and this is Trump doing.
I'm not sure if this is Trump being stupid or he wants like a deal out of it from Russia. Or I can't imagine like what can you get from Russia as a deal? I don't Hmm. know. So frankly, I'm not like in a position at this point because I don't know ये जो positioning Trump और उसकी टीम ले रही है, I don't know इस सब के पीछे क्या है, like उनकी thinking क्या है. I think I don't think anyone has any idea. So it's hard to say. Yeah, makes sense. What do you feel like So I regardless? basically had like another question, and that was, don't you think that Russia in a process जहाँ पे यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनने से रोकते रोकते दे हैव बेसिकली मेड अप अ केस फॉर ऑल द यूरोपियन कंट्रीज जो रह गए हैं, वैसे कोई गिनती के ही रह गए हैं, स्वीडन, पोलैंड और इन सब के लिए, लाइक रशिया मेड इट ऑब्वियस कि भाई नेटो में चले जाओ, अदरवाइज वी आर कमिंग फॉर यू, एंड दे डिड. I think otherwise. So in I think रशिया ने ये और इसमें रशिया को क्रेडिट कम जाता है, यूएस को क्रेडिट ज़्यादा जाता है कि रशिया ने ये केस बना दिया है कि even though if you have a super strong sport to start with, they will push you in a war which you can never win. So maybe the best option is to work with us rather than relying on US support or because NATO itself, I see NATO breaking up. सो नेटो अपनी वैल्यू भी अब फॉर एग्जांपल ट्रम्प की एक और चीज़ हम बड़ी मिस कर रहे हैं। ट्रम्प नेटो के पीछे बार बार आ रहा है ना, वो कहता है हम क्यों दूसरे कंट्रीज की सिक्योरिटी पे कर रहे हैं, वाई आर वी प्रोटेक्टिंग कनाडा, वाई आर वी प्रोटेक्टिंग ईयू। तो you can if that's a pattern, if that's a way forward, you can see NATO being less effective, NATO being less attractive for all those EU countries to go through all of that fuss which Ukraine went into and gained nothing. That's my way of saying it. Right. So Finland and Sweden, I'll correct myself. I said Poland. Finland and Sweden have joined since the start of the war. Yeah, and Finland is Uh, one of the most closest to Russia in that regard. yeah. So another interesting question is why Ukraine? Why not them? Again, I think it's more ethically aligned. There is more tension there. They have history, like their presidents wanting to join there. So it's more natural. Like Russia has more reasons to annex them than Finland. Like in in no word I can support any kind of attempt for Russia to have any kind of sport in Finland. Like why would it? It's not a natural lines for them. And all of I think that's all of the reasons which give me this understanding that these are very local problems. They should be understood better. They should be resolved diplomatically rather than using them as a weakness. I think we did use Ukraine as a Russian weakness, Okay. which was a geopolitical What do you think? problem. So you do not believe in Russia slash Putin having any um like grand thoughts about like the reformation of the great Russian Empire? You don't think it's. No, I can't deny it. I think that wasn't the main, or that wasn't the obvious motivating factor there. Mhm. Even if it had been, I think it's very easily manageable. Why you wanna like if that's the case, and if like there can be so many blockers for Russia, right, from the whole world. Why you need a war to stop that? Mhm. And if that's a strategy, it's a failed strategy in my opinion, and it's working for Russian interest. Right. And again, like another very interesting question that I have developed this habit of asking lately, get like the basically to get if like what kind of weightage do you have for the other perspective. So what do you think if it happened, would you subscribe? And again, this question might be asked to me as well. What do you think would happen
that would prove your thesis wrong. If what happens, then you would This say that is okay, my like this is that Russia is doing because of NATO expansion. because of NATO expansion. I think if you like out of this now, if a peace deal is reached where they say Ukraine can't join NATO, and then we don't see like this madness going on, that proves my thesis. If that's not the case, that's like proves my thesis wrong. But I think that's why I'm saying there are some things which you can only see by like you let them happen or you let them not happen. That whole narrative is too big to get deviated, like saying, "Oh, Russia wanna have like USSR again, that big Yeah, territory." Then you like there is no way to prove or like not yeah, but prove they, it. but that has been their position to start the war, so they can't just I leave it out of the demands, right? yeah, They I don't have think an I would option. naturally understand that has like that might should because that was the case once, right? But then US has already been like wanting to annex Canada, wanting to get like Greenland as well, and very open worded. Do you go war with them or do you stop them diplomatically? If stopping them diplomatically is the same option, that should be the same tool against Russia as well. Yeah, You can so control other countries' intentions, right? But you can't fight war based on intentions. right. Yeah, so just to answer the question from my perspective, because I keep asking it myself as well. I think if, like, whenever the dust settles around this, let's say Russia gets like 30%, 20% of Ukraine or whatever, this war is settled and everything. If Russia decides to go into like another country, I think Yeah, that that will give it away. That will tell that okay, whatever Russia was saying yeah, was just BS, and they have just these. yeah, and it can be a mixed bag as well. I mean, no, even Russia, why would they risk it all for just like one agenda where it's no, you can't join. Maybe they have more agendas, right? So, Yeah, and I think that's why I think you should go one by one, like not complicate yeah. diplomacy. That's why I think I have heard like uh, many talks from John Mearsheimer and Jeffrey Sachs. They go. Jeffrey Sachs was in EU Parliament the other day and was basically schooling them. He's a professor and he acts like a professor. So I have listened to them very carefully. That where are they coming from? So the and the purpose of this episode was also to have like an open idea about okay, this is what I believe, but Hmm. what about Yeah, this the story? other side. Yeah, so I wanted to approach it at that. It basically bugged me when so I was narrating a story which was basically based on facts. It was basically Russia into this invasion on Ukraine. They were bombing the hell out of Mariupol. So I hid all the names of places and the country doing it, and I asked a friend, and he said that you're talking about Gaza, and I said here is my point. So there, and especially ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में Zelensky and Ukraine, and I think that's where the Russian propaganda that I talk about comes in. So much so that Oval Office में a guy had the guts to ask Zelensky a question कि why don't you wear a suit? If Yeah, that is not propaganda's doing, I don't know what is. But anyways, coming back to the point, what I meant to say was there was a situation where like it was mocked कि वेस्ट के अंदर लोगों ने गाड़ियों के ऊपर यूक्रेन के झंडे लगाए हुए हैं. They have this sympathy for Ukraine. ये यूक्रेनियन जो हैं वो इस मुल्क में आ रहे हैं और उनको जो है लोग अपने घरों में जगह दे रहे हैं, राइट? एंड फिर yeah. था जी कि इनके ऊपर अटैक हुआ है और इनके ऊपर लोग मरे. All this, I know people who criticized that, and then they said that देखो यार फलस्तीनी आते हैं, उनको अगर मुसलमान यहाँ पे रख लेते हैं तो उनको जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है. देखो यार उसने गाड़ी पे फलस्तीन का झंडा लगाया था तो उसकी गाड़ी तोड़ के चले गए. So I think
जब यूक्रेन वॉर हुई थी, एवरीवन पॉइंटेड आउट दोज क्लिप्स रनिंग ऑन बीबीसी जहाँ पे वो कह रहे थे कि दे आर पीपल लाइक अस विद ब्लू आईज, एंड वी ऑल मेड फन ऑफ दैट, राइट? बट देन, like, many of us had the same similar kind of hypocrisy within, where we saw one side of it but totally ignored the other. So That's that's, true. yeah, that's where And that's I exactly my problem is, remember when Ukraine war started, even all the corporates, like मीटिंग स्टार्ट होती है, मीटिंग के स्टार्ट में यूक्रेन के लिए बात की जाती थी, राइट? और मेरी 99% प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है. व्हेन आई सी द इम्बैलेंस, इम्बैलेंस अगेन एज अ कंपैरिजन यू ड्रॉन के, एक चीज पैलेस्टाइन के साथ हो रही है, आपको वही चीज फिर तब क्यों तंग करती है जब मुस्लिम एग्रेशन, मतलब कोई कंग्रेशन होता है वहां पे पैलेस्टाइन के लिए दुआ की जाती है, एक साइड पे आप कमर्शियल मीटिंग्स के अंदर अपना नैरेटिव ठोक रहे हो, गले yeah, के अंदर डाल रहे हो, ठीक है, ना चाहते हुए ह्यूमन नेचर की वजह से फिर आप अपनी बाइसनेस क्रिएट करते हो कि लाइक yeah, हमारी दफा तो ये होता है, अपनी hmm, दफा आप ये करते हो तो आई डोंट एग्री विद योर कॉज, yeah, सो यू पुश दैट कॉज बैक. hmm. That makes basically their position weaker. Like या that's hypocrisy on grand scale. Okay, I think we are well over an hour. Do you have any questions or cover anything? No, I think we're good. It's Yeah, I just a think, lot to unpack and a lot to just see, wait and see how it yeah, unfolds. yeah, it has been detailed. I like the fact that we tried to present like both sides of the story. But okay, have a good day. You're fasting today. Yeah, fasting. Oh, okay. Looking forward of that. Have a good day. See Yeah. you. Bye. Take care, everyone.